चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। खबरों की शुरुआत करने तो पहले एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस ते। मिसिसागा विच मनाया गया 15 अगस्त का दिन। पैनोरमा इंडिया वालों पहली बार ड्राइव थ्रू परेड का किया गया प्रबंध। भारतीयों ने मनाया आज़ादी दिहाड़ा। कनेडा विच समय तो पहला फैडरल चोणां का ऐलान 20 सितंबर नूं होणगियां। हुण कनेडा विच फैडरल चोणां का ऐलान होंदे ही सियासी पार्टियां ने आरंभी चोण मुहिम। कंजरवेटिव आगू एरिनो टूल ने साझा किया अपनी पार्टी का चोण एजेंडा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा विच वसदे भारतीयों ने 15 अगस्त का दिन काफी धूमधाम नाल मनाया ते पैनोरमा इंडिया वालों इस दिन नूं खास बनाउण लई कई खास प्रोग्राम भी उलीके गए सन। इस संबंधी एक खास प्रोग्राम मिसिसागा विच करवाया गया जिथे वसदे भारतीयों ने काफी धूमधाम नाल आजादी दिहाड़ा सैलीब्रेट किया। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे लोकां ने अपने अपने सभ्याचार नूं दर्शाउण लई खास टेंट लगाए गए। इस तो इलावा यह पहली बार होया है कि आजादी दिहाड़े नूं सैलीब्रेट करन लई एक ड्राइव थ्रू परेड भी की गई। इस मौके आए हुए लोगों ने अपने विचार साझे करदे इस दिन की खासियत बारे भी दस्सिया। आज इंडिया डे की सेलिब्रेशन धूमधाम से हो रही है। मिसिसागा में हम 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैनोरमा इंडिया की ड्राइव थ्रू परेड से पहली बार हुई है ये चीज, ये कभी भी नहीं हुई है। आप पीछे देख सकते हैं ये सारे स्टेट्स फ्लोट्स ऑफ इंडिया हैं और ये सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें ये हर स्टेट बनाया है। आज कंपटीशन भी चल रहा है, वोट भी कर सकते हैं इनके लिए। कल रात तक, मंडे रात तक हमारा स्टेज फुली खुला था। आज 20+ स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन हुई है। आज हर स्टेट से परफॉर्मेंस हो रही है। लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, थ्रू जा रहे हैं, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं सारे स्पॉन्सर से। बच्चे इतने खुश हैं, फ्लैग्स लहर रहे हैं। हम यही चाहते थे कि सारी फैमिलीज निकले, घरों से निकले, सेफली निकले ताकि हमारे साथ ये सेलिब्रेशन हो सके। इसके लिए हम कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी साथ जुड़ के ये आज कर सके हम। और ऑफ कोर्स हम सिटी ऑफ मिसिसागा का थैंक करना चाहते हैं, टूरिज्म मिसिसागा, बिकॉज वी आर इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मिसिसागा एंड आई होप दैट यू ट्रूली एंजॉय एंड दिस इज व्हाट आई कॉल road to recovery. It means next year I hope we join in person and hopefully somewhere huge and we can have a great celebration. Happy Independence Day. Jai Hind. आज पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम यहाँ पर गुजरात का फ्लोट किया हुआ है पैनोरमा इंडिया और कॉन्सुलेट जनरल के ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज हमने 2 थीम रखी है गुजरात की। एक है हमारा ट्रेडिशनल जो गुजरात का कल्चर है, चाकड़ा है, वो अम्ब्रेला है, रंगोली है, सारा कुछ। और दूसरी तरफ वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है और वो यूएस का जो स्टैच्यू है उससे भी मतलब बड़ा है ये। सो दैट्स व्हाई द वर्ल्ड रेकमेंड द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द और वो हमारे गुजरात में है। सो वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग्स एंड दे हैव ए डिफरेंट टूरिज्म थिंग्स, न्यूट्रिशन पार्क, कैक्टस गार्डन और काफी वहाँ पर मतलब घूमने का है। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट यूनिटी ऑफ स्टैच्यू इन कैनेडा। सो थैंक यू सो मच चमकोर जी फॉर गिविंग अस दैट अपॉर्चुनिटी टू इन योर। और मेरा नाम चिंतन भावसर है, प्रेसिडेंट ऑफ नटराज यूथ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमें बहुत प्राउड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जिन्होंने इस देश के 500 राजाओं को इकट्ठा करके भारत राष्ट्र का निर्माण किया था। इसलिए उसको लोह पुरुष भी बोलते हैं और इसीलिए उनका सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाया है गुजरात में और उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मीन्स के सभी को इकट्ठा किया था, इसलिए इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। तो इसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और मेरे चमकूर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। Today in Canada, TACA, our association, represents Telugu community in GTA, Canada. Today we put a float to commemorate our 75th independence, India's Independence Day. We are celebrating here along with other states in this complex organized by Panorama. Today we displayed here both states, Telugu speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. And Telangana's main culture is Batakama, and here displaying from Andhra Pradesh
all the toys, how the cultivation happens from the farmers. From here, you see, like they put the seeds here, and all the way how the grains come to the house, and we depict it like that. Okay. Today, Telugu community, Telugu speaking people is almost like 11 crores, second most spoken language in India after Hindi. So we are very happy to be here as part of India's 75th celebrations, and everybody happy Independence Day. नमस्कार, राम राम भैया, आप सभी को सौम्या मिश्रा का नमस्कार। उत्तर प्रदेश का जो ये हमारा गांव है, इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। हमने इस गांव को सस्टेनेबल विलेज दिखाया है कि भारत में कैसे जितने भी गांव होते हैं वो कितने सस्टेनेबल होते हैं, जीरो वेस्ट होते हैं, हर चीज को रीयूज किया जाता है, रीपर्पस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट ओवर खाना गाय को, कुत्ते को या बकरी को खिलाया जाता है, काउ डंग को यूज करके कुकिंग की जाती है, इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल। सो वी बेसिकली रीपर्पस, रिसाइकल एंड रीयूज एवरीथिंग, और हमने वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो आइए और 15 अगस्त पे एक बार फिर से गांव का दर्शन कीजिए इन कनाडा। 15th August marks the Independence Day है, सारी इंडिया डे। Of course, इंडिया का इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज। Although we follow a lot of the British culture, ironically, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस एक डिफरेंट लेवल पे है। वी हैव वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी नाउ, वी हैव एन इमर्जिंग इकोनॉमी, एंड वी हैव इंडियन डायस्पोरा हियर इन Canada, for which we are celebrating with Panorama India. We have so many Indian people here, especially Punjabi speaking people. When I came to Canada, it was hard for me to believe I'm not in a mini Punjab. There was the flavor of Punjabi culture, Punjabi food that kept the Indian inside me alive here. And today I'm hosting this Panorama India event, gives me a different kick. So thank you GTA News for always covering everything that's going all across Canada and especially Ontario area. Thank you ਚਮਕੌਰ ਭਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 338 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ 'ਚ 155 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਲ 119 ਬਲਾਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਕੋਲ 32, ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ 24, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2 ਤੇ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। My friends, it's been a big couple of years. The last 17 months have been like nothing we've ever experienced. And we're all wondering what the next 17 months, not to mention the next 17 years, will hold. A global pandemic, a global recession, a global climate crisis that's causing wildfires and flooding around the world. You're probably wondering what this means for you, for your job, for your kids, for your retirement, for your community, and for your country. Well, that's fair. But just look at what Canadians did in this time of crisis, in this time of uncertainty. When this pandemic struck, Canadians dug deep. You put on your mask to keep your neighbors safe. You followed public health rules, stayed home, and supported our frontline workers. And you rolled up your sleeves to lead the world on vaccinations. No one expected this crisis, but time and time again, community after community, you showed what mettle we're made of as Canadians. So don't stop now. If you haven't already, go get vaccinated. And if you have, talk to the person you know who still needs to get their shot. They won't necessarily be easy conversations, but they're important to have. We owe it to each other. Because with our actions, we show what it means to be Canadian. And now, more than ever, that matters. Look, COVID-19 wasn't something we expected as a government, either. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। COVID passports, or a vaccine passport or some sort of passport, is something that the provinces are rolling out in a variety of different ways. They've used proof of vaccination, they've used QR codes, and now some provinces are going to a vaccine passport. There's also vaccine passport
being considered for people that want to travel abroad because countries will require proof of vaccination. I always say vaccines are a critical tool. They're the most important tool for us to help us turn the corner in COVID-19. They're safe and effective for use, and I've been very public about how important I think it is for people to be vaccinated, but to also use all the other tools we have, and we've been using for 15 months. Rapid testing and screening. We haven't been doing enough of that in the last year, quite frankly. Mask use, distancing, sanitation, these sorts of things. I think Canadians need to be respected to make their own personal decisions with respect to vaccines or any decision related to their personal health. And I think we should provide people with the information, tell them and allow them to know that vaccines are safe. But I don't think there should be coercion here. We have to work together through the crisis. So if there needs to be some reasonable accommodation to use rapid screening on a daily basis or before a trip, I think we have to try and respect one another as we all fight COVID-19. And in fact, we have to support what the provinces are doing, because when Mr. Trudeau was months late after other countries with a vaccine, it was the provinces that had to make tough decisions about closures, about restrictions. They were dealt the difficult decisions. It was the same with the Delta variant. Mr. Trudeau was late at the border at the beginning of the crisis, and again with variants. And it's the provinces that pay the price. So as a federal leader looking to unite the country, I'll always respect what the provinces choose to do to keep people safe within their provinces, within their jurisdiction. उधर एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने भी अपनी चोण मुहिम की शुरुआत कर दित्तियां ने, जिस दे विच उन्हां ने कनेडा दे वख-वख मुद्दਿਆਂ उत्ते विचार चर्चा कीती ते अपने चोण एजेंडे बारे जानकारी भी साझी कीती. These crises have only gotten worse over the past 6 years. When we think about the climate crisis, Justin Trudeau is the only leader of a G7 nation who has increased emissions over the 6 years he's been in power. And we know that the climate crisis is so devastating. We are feeling the impacts of it right now, with forest fires across Canada, making it hard to breathe, making it hard to see the sky. This is a real challenge that we're up against, and it's only getting worse. We know that the housing crisis was a crisis before the pandemic. It's only gotten worse over these 6 years. It's becoming more and more unaffordable for people across the country to find a place that's in their budget to rent or to own. And we know that Indigenous people continue to face serious struggles, not having access to clean drinking water, being denied basic human rights. All these things have only gotten worse over the past 6 years. And despite things getting worse, we see Justin Trudeau right now focused on an election. We are still in a pandemic. We are still worried about this pandemic. And people have referred to the pandemic and said, well, we've all been in the same boat. And I say really clearly, we've not been in the same boat. We've been in the same storm for sure, but some people have ridden out this storm in luxury yachts while others have been in leaky lifeboats. We know that the ultra-rich in this pandemic have been given a free ride by Liberals and Conservatives, so they have increased their wealth. The richest billionaires in Canada have increased their wealth by $75 billion and counting, and Justin Trudeau's allowed that to happen. Companies like Amazon make record profits, but still contribute virtually no taxes in Canada. Instead of calling an election, Justin Trudeau should be focused on these crises, on getting people the help they need, on walking the path instead of walking away from these commitments. So many people are wondering why this selfish summer election. Well, it's clear Justin Trudeau wants to grab power, wants a majority. But why does he want a majority? तालिबान वालों अफगानिस्तान उत्ते हमलियां उपरंत कब्जा करन दौरान बदलदे हालातां दे मद्देनज़र कनेडा सरकार करीब 20,000 अफगान नागरिकां दा कनेडा विच मुड़ वसेबा करेगी. तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी दे देश छड्ड जाण उपरंत राष्ट्रपति भवन उत्ते कब्जा कर लिया है. कनेडा विच थां-थां तालिबान दीयां नीतियां खिलाफ प्रदर्शन भी कीता जा रहा है. You're fighting the same battle that those women, those children have to fight every day of their lives. They've been fighting it for 43 years. Who is going to pay for the blood of thousands of our soldiers now? Who is paying for the blood of our thousands of our children in Afghanistan? We lost thousands of children. We lost thousands of women. We lost
thousands of lives, millions of lives in Afghanistan. Those in attendance sharing stories of loved ones back home, like this woman. My grandmother was sitting there and crying. She's an 80-year-old woman. She was sitting there and she was crying, and she saw the news and she saw those disgusting people sitting in the presidential palace. I have family there who's been calling us to help us get them out of there. It's insane. The situation there is beyond terrible. Within 20 days, 20 years of work has been abolished. Organizers say they hope this rally brings awareness and sheds light on the suffering of the Afghan people. What we want for people to Afghanistan to know that even with everything happening, we stand by them, and it's not over yet. For us, we want peace, we want women's rights, and we want to make sure that everyone knows that Afghanistan's not taken over yet. Justin Trudeau, 20,000 refugees is going to look great on your election trial, but it's not the end of it. You need to sanction Pakistan. In order to be a refugee case for them to come to Canada, they have to leave Afghanistan and be registered as a refugee under the UN banner. Right now, it's almost impossible to get out of Afghanistan. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Namaskar, I am Apurva Shrivastava, Consul General of India in Toronto. On the occasion of India's Independence Day, I extend my heartiest felicitations to all Indians, Indo-Canadians and friends of India. August 15th is a very significant day for all of us. It fills us with the excitement of unfurling the tricolour, taking part in celebrations and listening to patriotic songs. This year is historic and special as it marks the beginning of the 75th year of India's independence, which is being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am sure the community will continue to organize and participate in events as we celebrate the Amrit Mahotsav across Canada. On this momentous occasion, we remember the sacrifices, renunciation and penance of our great forefathers. It also serves as a reminder for the remarkable progress achieved by our nation in various fields in the last 75 years. On behalf of the Consulate General of India in Toronto, my best wishes to the vibrant Indian community in Canada on India's Independence Day. Stay safe, stay healthy, Jai Hind. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। They're all anxious. You know, some of them are under evacuation alert. Some of them have families that have been evacuated and have homes in danger. And everybody's just heightened. It was an ugly monster coming at you. And it was ugly. Like, I never seen, like, flames. You didn't see much flames, but the red embers and everything just floating, just coming. You walk right up in, open the door, and there's the kitchen. You can see where the table's still sitting, the kitchen table. Yeah. Come on up. It's one of 28 buildings officials confirmed were destroyed when the fire crossed the highway into Monty Lake on August 5th. There's a 1981 Harley Davidson sitting in there. It's just melted. His dad wanted you to go in on a place with me, so I might do that. I don't know. I like it here, though. Yeah, I rescued her. Found a cat. I'd given kittens one Sunday morning and kept one. Yeah. She was a good buddy. ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 120 ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਤੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 4 ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। 90 ਸਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਟੀਆ ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੈਸ਼ ਵੈਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਜੈਨ ਵੈਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।